Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, welcome to my YouTube channel Prakash Tarot Card Reader. This video is for cure when the world will get cure for COVID-19. Now we all have been waiting for a cure, because unless and until there is a cure, again the life will not be normal. We all know that. We all fear of sending our kids to schools. We all fear to travel by public transport, and we all fear to go out at public places. But we all want to do all these things. We want our normal life to start. So it can only start when we will get a cure. So when the world will get cure. So I'll start. I'll do pendulum dowsing for this first. So look at this, the way I am holding this pendulum. Right now it is moving to and fro, so it is in neutral position. So first I'll ask for permission. Do I have the permission to douse? It's moving clockwise, so it's saying yes. Okay, now are we going to get a cure for novel coronavirus COVID-19 before 31st August 2020? No. It's moving anti-clockwise. Okay. Are we going to get the cure for novel coronavirus COVID-19 before 31st October 2020? Oh, it is moving clockwise. That means yes. Answer is yes. So between 1st September and 31st October, we are going to get cure of coronavirus, novel coronavirus COVID-19. Pendulum dowsing is saying yes. Now, again it's in neutral position. Now, next question will be, who will make it? Which country? Will this cure come from United States of America? No. Answer is no. Okay. This cure for novel coronavirus COVID-19, will this come from United Kingdom? Yes. It's saying yes. Okay. Now, along with United Kingdom, are we going to have the cure for novel coronavirus COVID-19 from other countries also? No. Again the answer is no. So pendulum dowsing has clearly indicated in yes and no that the cure for novel coronavirus COVID-19 will come in between 1st September and 31st October. And the good news is going to come from United Kingdom. So probably Oxford University will accomplish the task successfully, and they most probably they will give us the good news which we are waiting for. Now in Hindi, अभी मैंने जो किया वो पेंडुलम डाउजिंग था. पेंडुलम डाउजिंग से मैंने ये जानने की कोशिश की कि दुनिया को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का
क्योर यानी दवाई कब तक मिलेगी, तो सबसे पहले मैंने यही पूछा और जवाब आया कि 1 सितंबर और 31 अक्टूबर के बीच में के दरमियान ये दवाई बनेगी। अब ये जो दवाई रहेगी ये कौन बनाएगा, कौन सी कंट्री में सबसे पहले बनेगी? तो सबसे पहले मैंने चेक किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आया ना। फिर मैंने चेक किया यूनाइटेड किंगडम, तो आया यस। फिर सबसे लास्ट में मैंने चेक किया कि क्या यूनाइटेड किंगडम के अलावा और कोई भी कंट्री सक्सेसफुल होगी दवाई बनाने में, तो आया ना। सो हमको ये जो भी दवाई मिलने वाली है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 की, ये आएगी यूनाइटेड किंगडम और मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वही लोग हैं जो ये प्रयत्न कर रहे हैं दवाई बनाने का, और अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि वो काफ़ी करीब है। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप गिविंग मी योर आइडिया, सजेशंस एंड फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आइडियाज़, सजेशंस और फीडबैक्स हमेशा देते रहें। थैंक यू।